Hello students, how are you? I hope you all are good. Wishing you a very good morning. So I am your physics teacher Durga. Will discussing about the unit and dimension, right? I hope you all are fine. सब अच्छे होंगे. Okay. और अच्छे से पढ़ाई चल रहा होगा. Okay. So previously हमने क्या पढ़ा था हम लोग ने? कुछ ये शुरू किए थे यूनिट एंड डायमेंशन और बहुत सारी चीजें बातें किए थे. Like we discuss about what is principle of homogeneity. ओके वो क्या होता है और सब कुछ पढ़े थे और उसके ऊपर क्वेश्चन किए थे और द मेन डिस्कशन वी आर टॉकिंग अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ द डायमेंशनल एनालिसिस, राइट? द एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस. तो सो फार हमने क्या क्या पढ़ चुके हैं. आई होप तुम लोग रिवाइज कर रहे होगे, क्वेश्चन लगा रहे होगे, बिकॉज अगेन आई एम टेलिंग for your JEE and NEET exam you must solve questions rather than the theories. Theories are important, no doubt, but at the your ultimate goal should clear the question. Okay, you read theory, solve question, and if you able to solve question, it means you know very well the theories, right? Okay, so today we'll discuss about the part 4 of this unit and dimension. Okay, it is actually part 4, and in this video we'll learn about the third principle of the third application of unit the dimension analysis. Like we can find the formula, not exact formula but almost the formula, by applying the dimensional analysis rule. Okay, okay, so let's start. So let me tell you like what are the things we have discussed so far. Let me check either whether I'm online or not. Give me a couple of minutes. Whether I'm online or not, give me a couple of minutes. Okay, so we are online. Okay, so let's start and first discuss. Let's discuss what we learned so far. I hope you have memorized this 7 fundamental quantities. These are important. Okay, and I think everything is same. That current is somewhat it's A, and temperature is K or theta. Okay, that thing candela and the amount of substance. I hope you remember this thing. Okay, how to find dimension? I told you have to know the formula. Okay, you must know the formula I told, and I solved many questions on this. Yeah, you're discussing the application. So far, we have completed these things. Uh, so far, what we have completed? Hmm. The checking of dimensional constancy of equation. What is this thing? I told. It's called principle of homogeneity. What I told. If a physical equation, like this thing, okay. Checking the dimensional constancy of a equation of an equation. Okay. मैंने क्या बोला था इसमें? If a physical equation is correct, if a physical equation is correct, the LHS side dimension must be equal to RHS side dimension. Okay, the LHS side dimension must be equal to RHS side dimension. Okay, और इसमें क्वेश्चन भी किए थे बहुत सारे. ओके, ये तो लिखा था मैंने. अगर ये क्या s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर में s इज योर डिस्प्लेसमेंट, s इज योर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इज योर डिस्प्लेसमेंट, then ut must be displacement and half at square must be displacement. Okay, that is your principle of homogeneity. Okay, okay, और ये मैंने बोला था कि अगर ये प्लस माइनस लेस देन ग्रेटर देन जो भी हो उस साइड में, बट एलएचएस आरएस का डायमेंशन क्या रहता है? सेम रहता है. ओके, और ये किए थे क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन किए थे. ओके, एक्स स्क्वायर का बी का डायमेंशन होगा ये पी है, तो सब किए थे.
and to convert one given system to another given system of unit, right? In system of units मैंने किया था, right? कि कैसे चेंज करते हैं वो वाला, देखिए आई थिंक वे भी किए थे सब चीजें। ओके, आज पढ़ेंगे ये deducing the relationship between the physical quantities. Okay, deducing the relation between the physical quantities. Okay, तो क्या मैं बोलना चाहता हूँ, देखो ओके, देखो लेट सपोज कोई एक फॉर्मूला है। ओके, लाइक आई एम टेकिंग एन एग्जांपल। लेट सपोज, आई थिंक सबको पता होगा, you almost know that kinetic energy, okay, I'm taking potential energy का फॉर्मूला क्या होता है? mgh, right? So we know from the 9th class it is called gravitational potential energy। क्या होता है? mgh। m क्या है? m is mass of the object, mass of the object, g is your acceleration due to gravity, and h is your height, right? Okay, fine। so ये क्या mgh है, right? so ये क्या बोलता है? what is this rule is saying? this third one, let's suppose अगर तुमको पता है कि एक फॉर्मूला है, लाइक we know the gravitational potential energy, so we know that the potential energy depends on mass of the object, acceleration due to gravity and height of the object। if you know, like तुमको पता है कि किस में डिपेंड करता है? mass of the object, acceleration due to gravity and height। अगर ये तीनों के ऊपर डिपेंड करता है ये तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी, तो उनका फॉर्मूला क्या होगा? लाइक you have to make a relation, or you have to find a formula of potential energy। you have to find a formula for the potential energy in the terms of m, g and h। okay, तो क्या क्वेश्चन बनेगा इससे? सी, okay, the question is here, like we have to find the formula of potential energy in the terms of m is mass, okay, mass m, acceleration due to gravity, your small g, and height। okay, तो क्या पता करना है? अगर mgh के टर्म में you have to find the gravitational potential energy, in the terms of mgh you have to find gravitational potential energy। okay, so how to find? so let me do the steps। first write all the dimension of everything given term। okay, हमको क्या पता करना है? इस तरफ क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ m, g and h में क्या रिलेशन होगा कि वो पोटेंशियल एनर्जी देते फॉर्मूला। ओके, सो ओके, बोलो, यू कैन अप्लाई दैट प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। वो क्या बोलते हैं? if an equation is correct
the LHS side dimension must be equal to RHS side dimension. The LHS side dimension must be equal to RHS side dimension. Okay. So एक क्वेश्चन करते देखो, समझ आ जाएगा उससे. तो देखो फर्स्ट क्या करना है, यू टू राइट ऑल दैट dimensions. Okay. So what is energy dimension? What is potential dimension? Potential energy dimension. तो क्या है? What is, see, it is a potential energy. It is also energy, kind of a energy. And energy का dimension क्या होगा? Same ही होगा. देखो कोई भी एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, डायमेंशन क्या होता है? फॉर्मूला अलग होता है, बट डायमेंशन क्या है? एनर्जी का ही होता है. बट एनर्जी डायमेंशन, एनर्जी इज वर्क डन, एनर्जी इज वर्क डन. तो क्या होगा? m1 l2 t minus 2 f dot s, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स क्या है? m1 l1 t minus 2, डिस्प्लेसमेंट क्या है? l. तो m1 l2 t minus 2. ओके, तो ये हो गया. तो मास का क्या है? m1. जी का क्या है? जी क्या है? एक्सेलरेशन. जी क्या है? योर एक्सेलरेशन. जी इज योर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. योर एक्सेलरेशन है ना, इट आल्सो कॉल्ड एक्सेलरेशन. तो क्या होगा ये? जी के मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इट्स l1 t minus 2. ओके, एंड योर हाइट, हाइट क्या है? लेंथ है, तो इट्स l1. ओके, तो अभी क्या करना है, इस तरफ क्या पता करना है? सो लेट्स सपोज द फॉर्मूला इज पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? और m2 पावर a, ओके, और ये g पावर b, और ये h पावर c. ओके, लेट्स सपोज मास का क्या है? मास का पावर a है, g का पावर b है, और h का पावर c और पावर c. तो अभी क्या करना है इसमें? यू टू पुट डायमेंशन ऑफ ईच टर्म. डायमेंशन ऑफ ईच टर्म. ओके, सो पोटेंशियल डायमेंशन क्या है? व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी? m1 l2 t minus 2. okay, I'm writing directly proportional to, okay, directly proportional to m का क्या? m है, m to the power a. ओके, g का क्या है? l1 t minus 2, t minus 2 पावर b, और h का तो l है, l पावर c. ओके, फाइन. सो इधर क्या होगा? m1 l2 t minus 2, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू क्या है? तो देखो m पावर क्या है? a. l का पावर क्या? l का पावर यहां से क्या? b प्लस c, और t का पावर -2b, -2b. ओके, अभी कंपेयर करो, अभी कंपेयर दिस बोथ द साइड. ओके, तो क्या होगा? कैन आई लाइक दिस? बाबर m का किस, इस तरफ क्या है? a है, इस तरफ क्या है? 1 है, तो आई कैन राइट a इक्वल टू 1. ओके, बाय कंपेयरिंग दिस टू, by comparing LHS RHS, by comparing LHS and RHS, क्या लिख सकते हैं? A इक्वल टू 1. इसके बाद B प्लस सी क्या है? B प्लस सी किसका पावर है? इट्स पावर ऑफ L, सिर्फ 2 हो गया. ओके, एंड इट्स माइनस, एंड -2b इक्वल टू कितना हो गया? -2. ठीक है पापा. ओके, तो क्या हो गया अभी? तो ये b इक्वल टू क्या हो गया? 1. b इक्वल टू क्या हो गया? 1. ओके, if b इक्वल टू 1, then what is, then what is this? Then 1 plus c इक्वल टू 2. 2 तो c कितना हो गया? c भी हो गया 1, राइट? तो देखो a क्या हो गया? a is 1, b is 1, and c is also 1, right? We got that value. Okay, a का वैल्यू 1 हो गया, b का वैल्यू भी 1, एंड c का वैल्यू भी 1 हो गया. तो हमने क्या लिखा था? दैट पोटेंशियल एनर्जी दैट प्रोपोर्शनल टू क्या? m to the power a, g to the power b, and h to the power c, h to the power c. तो मैं क्या लिख सकता हूँ?
If I want to do proportionality, you would make a constant, put a constant, then that potential energy some constant time because क्या करना है? If you remove the proportionality, you have to put a constant. Okay. A कितना हो गया? A is 1. B कितना हो गया? 1. C कितना हो गया? 1. तो connect like this, K into mgh, K into mgh, और K का वैल्यू क्या? एक नंबर है. K का वैल्यू क्या है? K is a constant, a numerical constant. Okay, numerical constant. तो K का वैल्यू क्या? एक नंबर है, एंड वो पता नहीं होता है, बट हमको पता है mgh फ्रॉम द, वो दे देंगे फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट. देखो आइदर K का वैल्यू गिवन होगा, K का वैल्यू गिवन होगा, वो दे देंगे, नहीं तो ऐसे बोलेंगे फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट इट्स फाउंड दैट K इक्वल टू 1, K इक्वल टू 1, तो गिवन ही होगा. इफ गिवन K इक्वल टू 1, देन क्या हो गया फॉर्मूला? देन इट फॉर्मूला बिकम क्या हो गया? m, K का 1 पुट कर दो, K इक्वल टू 1 पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा? 1 टाइम्स mgh. तो क्या होगा फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी का? mg इंटू h, जो हमको पता है पहले से, राइट? तो मैंने क्या बोला, अगर इफ यू नो ऑन द व्हाट आर द टर्म्स द फॉर्मूला इज डिपेंडिंग, इफ यू नो on what term formula is depending, then you can find the formula, not exactly but almost. वो क्यों exactly नहीं बोल रहा हूँ, we'll discuss about this. Please write these things. Okay. So क्या लिखा था मैंने? The steps are very simple. To find the formula by dimensional analysis, the steps are, okay, see, write all the given terms like energy, mass in the dimensional form, in the dimensional form. Okay, then apply principle of homogeneity, principle of homogeneity. मतलब क्या? मतलब अगर एक इक्वेशन करेक्ट है तो LHS dimension must be equal to RHS sides dimension. Okay, fine. Then compare the power, then compare the powers of each terms of LHS and RHS, LHS and RHS, then find their values, then find the values and put in the equation, and find their values and put in the equation. These are the steps to find. Okay, ये सब क्या हमने किए सब? देखो पहले क्या करें, देखो first we make an equation, right? The potential energy depends on mass and extended to gravity and h, right? Yes or no? Height. Then क्या हुआ? Then write all the things in that. Step 1, it is your step 1. It is your step 1, right? Not step 2. Write all things in their dimension form. It is your step 2.
Okay, and then make equation. This is on your step 3. Your step 3. Then comparing the terms. ये हो गया तुम्हारा step 1. Solve the equation. ये हो गया तुम्हारा step 4. Okay. By these 4 steps you can find the, but condition यहाँ पे एक है मैं बोलूंगा, but these are the steps. Okay. Yeah. Okay. So then move toward next question. Okay. Yeah. So if we know on the what on the factors on which the given physical quantity depends, if we know the factors on which the given physical quantity depends, we can find a formula relating to those factors. Like यही बोला मैंने, अगर हमको पता है कि फॉर्मूला किस में डिपेंड करता है तो हम एक फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं by dimensional analysis, but not exact. Why I'm not telling again and again not exact? I'll tell you. Okay, fine. So अभी एक क्वेश्चन करते हैं. ओके, ये तो पता नहीं होगा फ्रीक्वेंसी. या ये करते हैं, देखो क्या बोला. The centripetal force acting on a particle moving uniformly in a circle may depends upon the mass, velocity and the radius of the circle. Like क्या बोला, let's suppose क्या होता है, एक होता है सेंट्रिपेटल फोर्स. शार्प टर्म्स में पढ़ोगे. your centripetal force. Okay, देखो, let me tell you, if an object moving in a circular path, it required a force is called your centripetal force. The force which is responsible for the circular motion is called your centripetal force. Okay, तो फोर्स पे डिपेंड करता है, तो हमको तो इतना नहीं पता, वो पढ़ेंगे आगे जाके सर्कुलर मोशन में सेंट्रिपेटल फोर्स पूरा पूरा. ओके, तो दैट सेंट्रिपेटल फोर्स सॉल्यूशन. ओके, सेंट्रिपेटल फोर्स डिपेंड्स ऑन किस किस में, डिपेंड्स ऑन mass, velocity and radius. Okay, so क्या देखो लिखे सेंट्रिपेटल फोर्स मास, वेलोसिटी एंड रेडियस. तो क्या ये फोर्स है ना, it's called centripetal force, but it is force. So what is the dimension of force? m1 l1 t minus 2. देखो कोई भी फोर्स हो उसका डायमेंशन क्या होगा, m1 ल1. फोर्स का नाम देखो, सेंट्रिपेटल फोर्स हो गया, ग्रेविटी फोर्स हो गया, मैग्नेटिक फोर्स हो गया, फोर्स कोई भी हो, whatever the force, the unit is always Newton in SI and dimension is always m1 l1 t minus 2. getting? कोई सा भी फोर्स हो, यूनिट हमारा क्या रहेगा SI में, न्यूटन रहेगा, और डायमेंशन में क्या रहेगा, वोटर डायमेंशन इज ऑलवेज m1 l1 t minus 2. तो कोई भी फोर्स डायमेंशन में डिफरेंट, उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा. तो द सेंटीमीटर फोर डायमेंशन मस्ट बी इक्वल टू फोर्स डायमेंशन. इट्स अ फोर्स, राइट. इट्स m1 l1 t minus 2. ओके, इसका क्या है, मास का तो m है, मास का क्या है. ओके, इट्स योर वेलोसिटी, आई एम राइटिंग हियर द फोर्स. ओके, एंड द मास का डायमेंशन क्या है, m में m1. ओके, v का क्या है, वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी is your lt minus 1 meter per second. lt length by time, right? lt minus 1. and radius क्या होता है, is your distance, it's l. okay, fine. Okay, we write these things. Okay, so यही बोला, कोई भी फोर्स हो, like we have many forces, right?
सो एक सेंट्रिपिटल फोर्स हो गया, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, मैग्नेटिक फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो गया। फोर्स कोई भी हो उसका यूनिट हमेशा क्या रहता है, न्यूटन रहता है एसआई में, और डायमेंशन हमेशा क्या रहता है, m1 l1। देखो यूनिट में भी चेंज हो सकता है बिकॉज यूनिट डिपेंड्स ऑन सिस्टम कौन सा ले रहे हैं। अगर मैं एसआई लूंगा तो क्या होगा, मेरा न्यूटन होगा, अगर मैं सीरीज लूंगा तो मेरा डायन होगा, राइट। बट डायमेंशन मस्ट बी सेम, डायमेंशन मस्ट बी सेम, ओके। तो क्या है डायमेंशन फोर्स का, m1 l1 t-2। अगर सेंट्रिपिटल फोर्स हुआ फिर भी m1 l1 t-2, इफ इट इज ग्रेविटी फोर्स m1 l1 t-2, कोई भी फोर्स हो दैट डायमेंशन इज ऑलवेज m1 l1 t-2, ओके फाइन। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, लिख देंगे इस तरफ। लेट्स सपोज आई एम राइटिंग सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोपोर्शनल टू, क्या है, किसमें डिपेंड करता है, मास के ऊपर, तो m पावर a v का पावर b, v क्या है, वेलोसिटी पावर b, एंड रेडियस को मैं r मानता हूँ, रेडियस क्या मानता हूँ, r मानता हूँ, r के पावर c, ओके ओके। अब क्या पता, अब क्या पुट करना है, अब यू पुट द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म। व्हाट इज सेंट्रिपिटल फोर्स डायमेंशन, so it's m1 l1 t-2 is directly proportional to m का तो m ही है, मास है ma, b का क्या है l1 t-1 का b, r का क्या है, r का क्या है l, l का पावर c, राइट, ओके। तो अब बोलना मुझे किस तरह, m1 l1 t-2, ओके, प्रोपोर्शनल टू, तो क्या होगा, m का पावर a होगा इस तरफ, l का क्या होगा, l का पावर यहाँ पे b, यहाँ से c, तो b प्लस c, एंड t का पावर क्या हो जाएगा, माइनस b, ओके। तो नाउ कंपेयर बोथ साइड, नाउ कंपेयर बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। क्या बोला मुझे, a इक्वल टू क्या बोला, by comparing the equation LHS are by comparing LHS and RHS, क्या बोला मुझे, a इक्वल टू 1 मिल गया तुरंत ही, a इक्वल टू 1, तो क्या मिला, b प्लस c इक्वल टू 1, राइट, एंड माइनस b इक्वल टू -2, माइनस b इक्वल टू -2। तो सॉल्व करो, इससे क्या मिलेगा मुझे, like what will get if I solve this, we have to find value of abc, we have to find value of, तो a का तो मिल गया ना 1, अब क्या b को मिल गया, देखो b और c का वैल्यू पता करना है ना, b का तो मिल गया, तो b क्या है 2 है, तो यहाँ पे पुट कर दोगे तो 2 प्लस c इक्वल टू 1, तो c कितना हो गया, c हो गया -1, राइट, ओके। सो यू श्योर a value is 1, c is -1 and b is 2, b is 2, okay fine, please write these things, okay, please write these things, okay fine। नेक्स्ट स्टेप क्या है, सो हमने क्या लिखा था इक्वेशन में, देखो इस इक्वेशन क्या लिखा था, दैट्स दिस इक्वेशन, हमने क्या लिखा था हमने इस इक्वेशन में, द सेंट्रिपिटल फोर्स डिपेंड्स ऑन like this, right, so I can write, sorry, so देखो ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ये कोई कंफ्यूज मत होना, so I can write the centripetal force, तो F लिख रहा हूँ, अब मैं क्या लिखूं, F क्या है तुम्हारा सेंट्रिपिटल फोर्स, F क्या है तुम्हारा सेंट्रिपिटल
force. Okay, I'm writing here centripetal force. Okay, confuse मत होना, centripetal force. क्या लिखते हैं? डायरेक्ट क्या लिखते हैं? m का पावर a, b का पावर b और r का पावर c लिखते हैं. ओके, m का पावर a, b का पावर b, r का पावर c. तो क्या होगा ये? सो अभी मैं उठाऊंगा पोजिशनल, तो f क्या हो जाएगा? f इक्वल टू सम कांस्टेंट टाइम. a कितना है? a क्या मिला हमको? a मिला, पर्टिकुलर नहीं क्या मिला? a is 1, b is 2, c is -1. ओके, लिखता हूँ a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2, c इक्वल टू -1. ओके, तो क्या मिला? m का पावर a मींस कितना? m पावर 1. ओके, b पावर कितना है? 2, r का पावर -1. ओके, r c ना, c -1 है. तो क्या मिला? f इक्वल टू कांस्टेंट टाइम, इसको हम लिख सकते हैं m b स्क्वायर बाय r, राइट? m b स्क्वायर बाय r. m is the mass. Okay, b is the velocity, r is the radius. So they'll given that k equal to, given that k equal to 1, k equal to 1. तो क्या होगा ये फोर्स? बिकम फोर्स बिकम, जब k में 1 पुट कर लोगे इसको, तुम्हें क्या मिला? mb स्क्वायर बाई r. तो क्या है तुम्हारा फॉर्मूला? क्या बना? mb स्क्वायर बाई r. ओके, आई होप यू गॉट दिस. So very simple. First write the equation, write the power, then find the, then apply the principle of homogeneity and equate the power the both side of LHS RHS and get the answer, right? It's mb square by r. So see again, I'm telling this chapter is they're asking, but not from this part as well. Okay, they'll ask some question, but the main thing I'll tell in this video today is the last of this unit and dimension. Then we'll move towards errors. Okay, so in the 4 videos we are covering the unit and dimension. But ये सब चीजें इतना इम्पोर्टेंट नहीं है मना नहीं, बट इतना क्वेश्चन नहीं आता. जब मैं बोलूंगा एक जो आगे जाके एक दो इक्वेशन बोलूंगा, उससे क्वेश्चन बहुत आते हैं, so to understand that. But this part is the base of these things, right? That things. Okay, so I'm Mr. Yeah, I hope you got this. Okay, I'm erasing. Okay, fine. ये हो गया. सॉरी क्या लिखा हूँ? देखो यही लिखा हूँ. If you know the factor, you can find those factor. Okay, like up पर the kinetic energy. अभी यहाँ पे twist आएगा. Okay, यहाँ पे twist आएगा. देखो. Okay, if kinetic energy of a particle, यहाँ पे कर रहा हूँ. If kinetic energy of a particle, you know that kinetic energy formula, right? We don't know that kinetic energy formula from our 9th class. क्या होता है kinetic energy का formula? It's your half mb square. Okay, half. What is kinetic energy? The energy of a body by virtue of its velocity, right? तो कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसमें क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी. If an object is moving, this body, this moving object has some kinetic energy, and we know the formula, right? Half mb square. So like here we have to find that what is the formula. We know that kinetic energy depends on mass and velocity, right? Mass and velocity, and we know the exact formula is half mb square, right? Exact is half. But let's suppose you don't know the formula. But you know that the kinetic energy depends on mass and velocity. Are you getting? I'm telling. Let's suppose you don't know the exact formula. You don't know like half mv square, but you know this much depends on mass as well as velocity. So by using the dimension analysis, can you able to find? And we are solving that, right? Okay. So let me write. Okay. So kinetic energy I'm thinking K, okay, it's K. Or Ke. Okay, I'm writing E. Energy is E, right? Okay. It depends on किसके ऊपर? Mass and velocity. Mass and
right? Mass and velocity. So now relation, right? So what's the first step? I write a solution here. See again, any energy, it's kinetic or may potential, kinetic or maybe it's potential or any kind of energy, its dimension must be same. See, whatever the energy, kinetic, but there are many kind of energy. Will read in work power energy. There are many kind of energy, spring energy, okay, electric energy, potential energy. Quite things are there. But any kind of energy, the unit must be same. What is energy unit? Energy unit in SI, joule, and dimension must be same. Whatever the energy, the dimension is always m1 l2 t minus 2. And what is energy? Force into displacement. Force into, see, energy is work done. Okay, energy work are equivalent. So energy is your work done. So whatever the dimension of work done, it must be equal to the work done dimension of energy, right? So what is work done dimension? M1 force into displacement. So M1 L2 T minus 2, M1 L2 T minus 2. Okay, and that is also energy dimension. Whatever the energy, the dimension must be same. Whatever the energy, what kind of energy it may be, the dimension must be same. Okay. So I'm writing that E dimension is how much? Energy dimension is M1 L2 T minus 2. And how we derive? I told that work done by formula of work. Work is force into displacement. Force is M1 L1 T minus 2 and displacement is L. You multiply M1 L1 become 2. It's T minus 2. Okay, fine. Okay. So now I can write the kinetic energy. Okay, and that mass is dimension is M. Mass is M1 and velocity is LT minus 1. LT minus 1, right? Okay. So now what is the next step? I'm writing here. Okay. See, that energy that is proportional to, okay, let's suppose M power A, mass power A and B power B. Okay, fine. Then put dimension of each term. Okay, it's how much? M1, L1, L2, M1, L2, T minus 2, M1, L2, T minus 2. It that is proportional to, put each term dimension, M power A, like M का तो M ही है ना भाई, M power 1, मास तो मास ही M power 1, A, B का क्या है? L1, T minus 1, right? Right? Now solve, compare it now, it's M1, L2, T minus 2. Now क्या होगा? M power A, L का power B, P power minus B. Okay, fine. Okay, so now compare both sides for ABC by comparing both sides. What will get? A कितना हुआ? M का A क्या है? M का पावर क्या है? A 1. L का क्या है? L ये B ये तो 2 है, right? So B equal to 2. Okay. And T तो जब मिल गया, मतलब T के माइनस B इक्वल टू माइनस 2, तो B 2 ही है ना? B तो 2 ही है, जैसे कर लो B 2 ही है, राइट? तो क्या मिला हमें? इधर A is your 1, B is your, यहाँ पे आता ट्विस्ट है. ओके, फाइन. अगर मैं यही पुट कर लूँ आगे तो क्या मिला मुझे इस फॉर्मूला में? तो वी रिटर्न दैट एनर्जी दैट इज प्रोपोर्शनल टू M पावर A B पावर B. तो क्या लिखूंगा ये? एनर्जी सम कांस्टेंट टाइम, A क्या है? M पावर 1 B का पावर 2. कितना आया? A इक्वल टू 1 B इक्वल टू है ना? A इक्वल टू 1 B इक्वल टू 2 आया. तो क्या है ये? हाँ, M का पावर 1 B का पावर 2. तो क्या होगा? एनर्जी इज सम कांस्टेंट टाइम mb square, कांस्टेंट टाइम mb square. बट बोलो, वी नो द एग्जैक्ट फॉर्मूला, राइट? वी नो द एग्जैक्ट फॉर्मूला, दैट इज हाफ mb square. तो यहाँ पे क्या होगा ना, देखो तुम सब कुछ फॉर्मूला फाइंड कर दी. व्हाट इज द एग्जैक्ट फॉर्मूला? हाफ
mb square. You find almost the formula, but you can't find the half. See, half में क्या लिखा हमने? k लिखा. We written that k. We have written that k. So can you find k? Let's suppose तुमको पता नहीं होता. Let's suppose you don't know the formula of kinetic energy. But anyhow, by putting dimensional analysis, we find that mb square. We found that mb square. But you can't be able to find this k. It's k actually. You can't be able to find this k. That is the drawback. That is the drawback of a dimensional analysis. See, देखो, for potential, you'll be able to find mgh, right? Because इसमें क्या था? k1 था, तो कुछ फर्क नहीं पड़ा. Similarly, for centripetal force, mb square पे r आ गया, उसमें भी k1 था. But यहाँ पे क्या हो गया? अब k ना 1 नहीं है, क्या है? हाफ है. तो देखो, तुम फॉर्मूला पूरा फाइंड कर, लाइक mb square you found almost the formula, but you can't find that k. We can't find that k. And that k क्या होता है? गिवन होता है. वो बोल देंगे by experiment, like there in the question they will tell, by experiment it's found that k equal to half. In the by experiment it's found that k equal to half. तो क्या हो गया? अगर मैं given that, ऐसे बोल देंगे given that k equal to half, given that k equal to your half, तो क्या हो गया? फॉर्मूला तुम पुट कर लोगे k equal to half, तो क्या आ जाएगा? एनर्जी इक्वल टू हाफ mb स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी. बट देखो, वो गिवन था, दे गिवन दैट k equal to half, देन एबल टू फाइंड. बट यही ड्रॉबैक है, तुम ना ये सब फाइंड कर सकते हो mb स्क्वायर, ओके, k का टर्म फाइंड करते हो, बट कांस्टेंट आ गया, k का वैल्यू कांट बी फाइंड ना. वी आर अनएबल टू फाइंड वैल्यू ऑफ k इफ दे नॉट गिवन. देखो यहां पे लिख रहा हूं नोट पॉइंट. Okay, we unable to find the value of proportionality constant, proportionality value of constant k, if they're not given, if they're not given, if it is not given, if it is it's not given. And it is one of the drawback of limitation. It is the one of the drawback or limitation of your, और पढ़ेंगे आगे जाके, limitation of dimensional analysis. Okay, it's one kind of a drawback or limitation of dimensional analysis. Okay, तो क्या बोला हमने? k का वैल्यू we can't able to find. Okay, if they're not given, we can't find that k value, right? So that is the limitation of. Okay, ये लिख देना. Who is EcoSort? Hi sir, hello. @EcoSort 777. Okay, fine. Okay.
चलो ये हो गया, क्या हो गया फॉर्मूला? आई होप यू गॉट दिस, इट्स योर that what is it, counting as, right? counting as e मानते तो your half mb square, हमने ये फाइंड कर लिया mb square बट अनएबल टू फाइंड हाफ, ये ड्रॉबैक है, पढ़ेंगे आगे। ओके ये तो क्वेश्चन करते हैं ये वाला। ओके सो क्या बोला, if velocity, time and force were chosen as basic quantities, means find the dimension of mass and energy। ओके सो वो बोल रहा है कि अगर वेलोसिटी क्या, वेलोसिटी टाइम एंड फोर्स, वेलोसिटी टाइम एंड फोर्स आर चोजन एज बेसिक क्वांटिटी, बेसिक क्वांटिटी, तो मास का फॉर्मूला क्या होगा? तो पूछ रहा है इन द सिंपल टर्म्स व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मास। इसमें क्वेश्चन ऐसे लिख सकते हैं इन द सिंपल टर्म, व्हाट इज द, क्वेश्चन ऐसे बोल सकते हैं सिंपली, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ mass and energy, mass and energy in terms of क्या, velocity, time and energy, velocity, time and force मतलब यही पूछ रहा है कि अगर इसको तुम फंडामेंटल मानोगे तो मास का फॉर्मूला क्या होगा, किसमें, एनर्जी इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, टाइम एंड फोर्स, और एनर्जी का क्या होगा, राइट? वही पूछ रहा है। ओके ओके so we apply करेंगे डायमेंशन एनालिसिस, लाइक द थर्ड एप्लीकेशन। सो अभी क्या करेंगे, पहले लिख दो डायमेंशन। ओके तो क्या हो गया, टू फाइंड डायमेंशन ऑफ मास, तो पहले वी सॉल्विंग फॉर मास एंड देन सॉल्व फॉर एनर्जी। सो द क्वेश्चन का मतलब ये है कि आई होप ये समझ गए, यू हैव टू फाइंड द फॉर्मूला फॉर मास इन द टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, टाइम एंड फोर्स। ओके तो देखो मैं दो तरीके से बोलूंगा, फोर्स को हम लिख सकते हैं मास। ओके ओके मैं पहले बोल देता हूं, उसके बाद डायमेंशन करते हैं। देखो वी कैन राइट F इक्वल टू एम ए, F इक्वल टू एम ए। तो ए क्या है, तो F बाई ए क्या है, F बाई ए तुम्हारा क्या है, मास है, राइट? वी नो दैट फ्रॉम न्यूटन लॉ, सेकंड लॉ, F इक्वल टू एम ए, तो सबको पता होगा, 9th से पढ़े F इक्वल टू एम ए। तो m क्या हो गया, F बाई ए, F बाई ए। तो फोर्स क्या है, फोर्स को क्या बोल सकते हैं, फोर्स को तो फोर्स मानो। व्हाट इज एक्सेलरेशन, तो किसमें पता करना है, इन द टर्म्स ऑफ फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम। वी हैव टू फाइंड द फॉर्मूला फॉर मास इन टर्म्स ऑफ फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम। तो फोर्स तो है ना इसमें, फोर्स तो है। एंड व्हाट इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज योर v बाई टी, v बाई टी। तो क्या होगा ये, बोलो, मैं पुट कर दूंगा v बाई टी इसमें, तो क्या होगा ये, तो f बाई v बाई टी, v बाई टी इज इक्वल टू मास। ओके तो इसमें क्या हो गया, मास क्या हो गया, m इक्वल टू लिख सकते हो इसमें f इंटू टी बाई बी, मिल गया। क्या है मास का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ एफ टी बी, F is force, T is time, B is velocity। F is force, T is time and B is velocity, right? तो क्या होगा in terms of F, B and T, mass, FT by B, वो तो simple formula से आ गया। Can you do by dimensional analysis? Yeah, we can do। Can you do by dimensional analysis? पहले लिख दो, उसके बाद कहते हैं dimensional analysis कैसे करोगे।
Okay, so now we'll solve by dimensional analysis. Okay, so ये तो फॉर्मूला से आ गया और यही फॉर्मूला आगे भी आएगा by dimension. So by dimensional analysis, by dimensional analysis. Okay, so how to do with dimensional analysis? See, देखो इधर क्या रहेगा, मास डायरेक्ट लिखता हूँ, okay, you know the steps. Mass directly proportional to force का power A, okay, V का power B and T का power C. F क्या है, फोर्स है, V क्या है, T क्या है, टाइम. ओके, तो क्या हो गया, M. ओके, proportional what is force, put the dimension, M1, right, mass power 1, तो फोर्स क्या है, M1 L1 T minus 2 का पावर M1 L1 T minus 2 का पावर A. ओके, B क्या है, L T minus 1 पावर B, और T का T है, टाइम का T का पावर C. ना कंपेयर द बोथ द साइड, तो क्या होगा, अगर मैं लिखूंगा यहाँ पे, तो M पावर 1 नल 2, M का क्या है, M का पावर A, L का क्या है, A प्लस B, A प्लस B, A प्लस B, T का क्या है, -2A माइनस B प्लस. ओके, M, आई होप यू गॉट. सिर्फ मैंने पावर से, बेस सेम है तो पावर ऐड हो गया ना, बेस सेम है तो पावर ऐड हो गया, बेसिक मैथमेटिक्स रूल. योर बेस इज सेम, पावर गॉट एडेड. ओके, तो नाउ कंपेयरिंग बोथ द साइड, क्या मिला, कंपेयर करें तो A मिला 1, राइट, A मिला 1. ओके, L क्या है, L इतना नहीं है तो L 0 है, इसको लिख सकते हो ना. ओके, लेट मी राइट हियर, कैन राइट लाइक दिस, M1 L0 T0, राइट इज ना, M1 L0 T0, कुछ नहीं तो 0 ना, anything 0 is 1 and you can multiply, right. M power A, L का पावर A plus B, here -2A minus B plus, right. Okay, तो क्या मिला, if you compare now equation both the side, A का 1 तो B, A plus B कितना हुआ, A plus B कितना हुआ, इसमें इसमें भी हो गया 0, और -2A minus B plus C is also 0, right. Okay, तो क्या हुआ इसमें, देखो अगर मैं A 1 पुट कर लूं तो B कितना हो गया, B हो गया तुम्हारा 1 plus B equal to 0, तो B is your -1, B is your -1. तो A का वैल्यू पता है, B का वैल्यू C तो पता कर सकते हैं, you know the A value 1, B is -1, C can find C. तो क्या -2 into -2 into 1 -2 minus of -1 plus C equal to 0, तो कितना हो इसमें, -2 plus 1 -2 plus 1 equal to 0, तो कितना हो गया, प्लस -1 plus -2 plus 1 plus C equal to 0, तो C कितना हो गया, C हो गया तुम्हारा 1, C कितना हो गया 1 -1, राइट. फाइन, बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस. तो क्या हुआ तुम्हारा, देखो A का वैल्यू हो गया 1, B का कितना आया, सी आई एम मार्किंग हियर, A is your 1, B is your -1 and C is 1, right. 1 -1 1, B is your -1, C is your 1. तो क्या लिखा था हमने कि मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F का पावर A B एंड T का पावर C, वो लिखा था ना. हाँ, F का पावर A B का B T का पावर C, तो ये कितना हुआ, योर A is 1, so mass is some constant time. Okay, F का 1, B का -1 एंड T का 1, तो क्या आगे सॉल्व करेगा, तो M is equal to some K times, क्या लिखता हूँ, F1 मतलब F into T by B,
बी माइनस वन नीचे आ जाएगा ना, तो क्या होगा, के इक्वल टू वन, गिवन दैट के इक्वल टू वन, तो क्या एम कितना हो गया, एफ टी बाई बी। देखो देम नहीं है रिजल्ट, उसमें देखो क्या रहता है उसमें, ये हमारा पहला रिजल्ट था, एफ टी बाई बी आ गया, उसमें क्या आ रहा है, by putting dimension analysis we also getting ft by b, so both are correct, both are correct. Okay, ft by b, right? Okay, how एनर्जी का तुम फाइंड कर लो भाई, एनर्जी एनर्जी क्या है, देखो एनर्जी में लिखता हूँ तरफ एनर्जी। ओके, तो एनर्जी क्या है, फॉर्मूला, तो एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, एफ का पावर ए मानो, बी का पावर क्या मानो, बी मानो, टी और सी मानो, राइट। एनर्जी क्या होता है, एम वन एल टू टी माइनस टू, एम वन वर्क डन एल टू टी माइनस टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 फोर्स के m1 l1 t minus 2, m1 l1 t minus 2 पावर a lt minus 1 b एंड t पावर c, और कंपेयर कर लो, एबीसी फाइंड कर लो, आ जाएगा। और भाई तुम फॉर्मूला क्या है ये तो कर लोगे, कंपेयर कर लो, पुट कर लो, आ जाएगा। और क्या हो सकता है, एनर्जी क्या है, एनर्जी इज वर्क डन, एनर्जी इज वर्क डन, और वर्क डन क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके राइट, तो फोर्स क्या है, तो एनर्जी को ये मान लो, फोर्स क्या है एफ, ओके, डिस्प्लेसमेंट क्या है एस, क्या है एस डी, एस मानो डिस्प्लेसमेंट। ओके, और हमको किसमें पता करना है, टू फाइंड द टर्म्स ऑफ फोर्स वेलोसिटी एंड टाइम। तो हमको एक पता है ना, वी नो दैट स्पीड डिस्टेंस टाइम, स्पीड क्या है, इसका मैं डी मानता हूँ, डिस्प्लेसमेंट डी मानता हूँ। ओके, तो मैं डी मानता हूँ, क्या होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, स्पीड इक्वल डिस्टेंस बाय टाइम, राइट, डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम, और बी स्पीड को भी मान सकते हैं, बी इक्वल टू बी मान सकते हैं, तो बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डी क्या हो जाएगा, बी इनटू टी इक्वल टू योर डी। तो डी में क्या पुट कर दोगे, बी इनटू टी, तो ई क्या हो गया, एफ इनटू बी इनटू टी। तो क्या है फॉर्मूला तुम्हारा इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, इन टर्म्स ऑफ फोर्स टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट, टाइम एंड वेलोसिटी, एफ इंटू वी इंटू टी, एफ इंटू वी इंटू टी, राइट, समझ आ गया। क्या है, फिर फॉर्मूला पता करना, एफबीटी पुट कर देना, आ गया, और उसमें इसमें करो इतना ही आएगा, यू सॉल्व बाय डायमेंशन एनालिसिस, यू कैन गेट द सेम फॉर्मूला। So what is the formula in terms energy in terms of force, velocity and time? It's your F into V into T. Okay, fine. Okay, ये कर लेना. Like I'm going towards next. Yeah, some important point for example. Main things we'll discuss here. Okay. See, the thing I'll tell here is very important for solving any kind of question in time. Okay, in a nutshell, I'll tell everything. Okay. So, power or exponent. Okay. There are two kind of, okay, let me tell first one. There are two kind of constant. There is two
kind of constants. First is your unitless constant, or you call, it's also called dimensionless constant, okay. Or the second one is constant with dimension, constant with unit, okay. मतलब क्या, लाइक इसमें एग्जांपल हो गया ऑल द नंबर्स, ऑल बहुत कुछ है, बट द मेन एग्जांपल हियर योर नंबर्स like 1 2 3, numbers like 1 2 3, they are called unitless constant. मतलब ये खुद से है, मतलब they don't need any unit, one is one, okay. And constant with unit, ये क्या हो गया तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारा like capital G, universal capital constant, Planck's constant h, okay. Speed of light, and speed of light क्या होता है, 3 into 10 over 8 in vacuum, कितना होता है, 3 into 10 over 8 meter per second. So there are two kind of constant, unitless constant or constant with unit, okay. Fine, okay. ये हो गया. Second one, power or exponent must be a unitless constant. What I mean to say, see, very very important, m power square, m is mass, m is your mass here, m is, okay, m is your mass, okay. So m power 2 is correct, but 2 to the power m is incorrect, it's your incorrect. Why? क्या रूल क्या है, पावर और एक्सपोनेंट मस्ट बी ए यूनिटलेस कांस्टेंट. सी, m क्या है, मास है, तो कुछ kg होगा ना, लाइक मैं इसको लिख सकता हूं ऐसे कि इसमें क्या होगा, 2 to the power 1 kg, मतलब क्या है, 2 to the power 1 का मतलब है, 2 to the power 1 का मतलब है 2 का 2, ओके, 2 2 kg, हम लिखते हैं 2 power 2 kg. तो इसका मतलब क्या है, तुम kg को लिखोगे, हाउ टू राइट kg, you can't write, right? So it's incorrect. So m2 power must be a unitless constant. It's very important, okay, very very important. One question they asked in JEE actually, must be a unitless constant, okay. Fine, let constant, okay, fine. तो तुम kg को लिख सकते हो, kg का क्या करोगे, 2 को पावर 2 स्क्वायर कर दोगे, बट kg का क्या करोगे, कुछ नहीं कर सकते, तो एक इनकरेक्ट है. तो m पावर 2 हो सकता है, बट 2 पावर m इज इनकरेक्ट, ओके. फाइन, ओके. सी, e क्या है, आई होप यू नो द वैल्यू ऑफ e, ओके, राइट. थर्ड वन, सी, e क्या है, e एक नंबर है 2.31, e एक नंबर है 2.31, ओके. e का वर्क क्या होगा हमेशा, पावर कुछ भी हो, इट्स ऑलवेज डायमेंशन फ्री, डायमेंशन लेस कांस्टेंट, okay. Let me write in proper way. e में क्या होगा, इट्स ए डायमेंशनलेस कांस्टेंट, ओके. डायमेंशन फ्री, डायमेंशन लेस होगा, पावर भी क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा, ओके. और इसमें साइन के अंदर 2 भी रहेगा, ये भी क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा, डायमेंशन लेस होगा. फाइन. साइन, एनी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आई कैन राइट, एनी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, मेट्रिक फंक्शन क्या होता है, साइन कॉस, साइन थीटा होता है ना, साइन थीटा होता है, और थीटा क्या, डायमेंशनलेस, थीटा क्या होता है, डायमेंशनलेस, बिकॉज़ व्हाई आई एम राइटिंग साइन इज ऑलवेज comes with theta, right? Sine always, sine or any trigonometry comes with a angle, it must be a angle, right? So you know that L equal to r theta, arc length, and L equal to r theta, तो थीटा क्या होगा, L by r is equal to theta. L क्या है, L is your length, r is also radius, L is your length, r is radius, so length by length ना, length by length,
so it's dimensionless. So theta is dimensionless. Theta must be dimensionless. तो इसमें साइन कोस जो भी हो उसके अंदर क्या रहेगा हमेशा डायमेंशन लेस रहेगा. ओके फाइन. ओके और होता है इनवर्स फंक्शन साइन इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और एक होता है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन. उसके अंदर भी जो आएगा उसमें इसमें क्या रहेगा ये हमेशा डायमेंशनलेस रहेगा. डायमेंशनलेस. ओके फाइन. आई होप समझ गए. ओके इसको क्या होगा क्योंकि ये हमेशा क्या नंबर होगा. क्या होगा नंबर हो. इट शुड ऑलवेज ए कांस्टेंट नंबर. ऑलवेज ए कांस्टेंट नंबर. तो ये भी क्या होगा हमेशा डायमेंशन लेस होगा. दिस थिंग्स आर क्वाइट इंपोर्टेंट. क्वाइट इंपोर्टेंट. ओके फाइन. ये तो तीन लिखा मैंने. ई पावर डायमेंशन लेस होगा. साइन का भी जो अंदर डायमेंशन एनी ट्रिगोनोमेट्री डायमेंशन लेस होगा. इनवर्स में क्या होगा डायमेंशन लेस ही होगा. ओके प्लीज राइट दिस थिंग्स. Okay, write these things, very important. Okay, now we'll jump to a question and we'll apply these things real life, then we got. Okay. देखो क्या बोला मैंने जो अंदर है. ओके आई तो समझ गए पॉइंट. एक क्वेश्चन करते हैं. देखो द इक्वेशन ऑफ वेव आगे पढ़ोगे वेव के बारे में. ओके y is a sin, like I hope it's visible, a sin x by mu, it's called mu. Okay, I think it's blurring sometime. X by mu minus k, x by mu minus k. So where omega is angular velocity and v is the linear velocity. Okay, and that the dimension of k will be okay. और x क्या है? x है तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट. होगा x क्या है तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट. ओके तो देखो क्या बोला इक्वेशन में. y equal to a sin omega x by b minus k, x by b minus k. Okay fine. So what is the dimension of k? Dimension of k पूछा. Okay तो बोलो हम लोग पढ़े थे like that very important word taught. We can add or subtract. We can add or subtract if two physical quantity are of same dimension. We can add or subtract two physical quantity are of same dimension. इसका मतलब क्या होगा. देखो हम x by b से k माइनस कर रहे हैं ना. we are subtracting x by b with k from x by b. x क्या है इसमें. x क्या है तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट है. क्या है तुम्हारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट. तो डायमेंशन क्या है l है. ओके एंड v तुम्हारा क्या है वेलोसिटी. v क्या है तुम्हारा वेलोसिटी. तो क्या एल टी माइनस वन एल टी. तो बोलो तो क्या बोला था अगर वी आर एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग x by b का डायमेंशन तो हम लिख सकते हैं ना बिकॉज वी आर सब्ट्रैक्टिंग देयरफॉर द डायमेंशन ऑफ because we are subtracting because of subtraction the dimension of x by v must be equal to dimension of k. Okay fine.
if you are subtracting, the dimension must be, say, what is x by b dimension? x is your, तो x by b dimension क्या होगा? x is l, b का क्या है? lt minus 1, l t minus 1. If solving, what you got? l कर जाए क्या रहेगा? t 1 by t minus 1 मतलब t. तो x by b t हुआ. इसका मतलब therefore k dimension is also क्या? t t1. ओके, तो क्या होगा ऑप्शन? ऑप्शन सी. वेरी सिंपल. देखो, क्योंकि हम k यू आर सब्ट्रैक्टिंग k फ्रॉम x by b, और हमने रूल पढ़ा था फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन इट्स होमोजेनिटी, द डायमेंशन मस्ट बी सेम ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटी. सो x by b का डायमेंशन k के साथ इक्वल होना पड़ेगा. दैट x by b डायमेंशन मस्ट बी इक्वल टू k डायमेंशन बिकॉज़ यू आर सब्ट्रैक्टिंग a सिमुलेटर. व्हाट इज x by b डायमेंशन? x इज डिस्प्लेसमेंट, इट्स l and b t lt minus 1 तो कट गया t, तो t1 हो गया. k डायमेंशन इज आल्सो. I know how we got this. Okay, I think you're not the limitation today also. Okay. Okay, let me tell you very quickly. देखो, see, while doing that thing, we are unable to find. Okay, मैं बोलता हूँ क्या क्या इसमें limitation है. Okay, see, देखो वो वाला फॉर्मूला देखो. काइनेटिक एनर्जी में क्या पता करा? काइनेटिक एनर्जी हमने डिराइव किया था ना. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ गया? mv स्क्वायर तक तो डिराइव कर दिया हमने, राइट? वी एबल टू फाइंड टिल द mv स्क्वायर. राइट, दैट काइनेटिक एनर्जी इज, हमने क्या पता करा? बाय डायमेंशन एनालिसिस करके हमने क्या पता कर दिया था? mv स्क्वायर तक तो आ ही गया था. क्वेश्चन क्या था? If kinetic energy of a particle depends on its mass and velocity, find the relation of, find the formula for kinetic energy in terms of mass and velocity. तो हमने क्या पता कर दिया था? इसका तो पता कर दिया था, बट ये हाफ का ना, मैंने लिखा था हाफ ना, वो गिवन देंगे. if they're given, that's okay, that k value is half, otherwise you're unable to find, you're unable to find. Okay, so वही लिमिटेशन है इसका. मैं बोल भी रहा था that we can't find if a formula contains dimensionless constant. Okay, it is the first drawback. क्योंकि जिसका डायमेंशन है उसको तो फाइंड कर सकते हैं ना बाय डायमेंशन, राइट? वी कैन फाइंड दोस थिंग दोस हैव डायमेंशन. दैट्स अ वेरी सिंपल. अगर का डायमेंशन है कैसे पता करोगे? लाइक नंबर से क्या है? मैं बोला ना, there are numbers, there are constant with no unit, no dimension, no unit and no dimension. ओके, नंबर्स होते हैं, नंबर का तो कोई डायमेंशन नहीं होता है ना, तो हम पता नहीं कर सकते. ओके, ये हो गया एक. वी कांट फाइंड. ओके, फाइन. और लिख दो ये, वी कांट फाइंड. ओके, सो जो कोई अगर फॉर्मूला में कोई कांस्टेंट होगा जिसमें डायमेंशन नहीं होगा तो उसका हम पता नहीं कर सकते. एनी हाउ बाय डायमेंशन एनालिसिस द लिमिटेशन. ओके, और सेकंड में क्या है? बाय दिस मेथड the equation containing trigonometric exponential logarithmic terms cannot be analyzed. Okay, मैं लिखा था ना इंपोर्टेंट टर्म में. ओके, सी, मैंने क्या बोला था? आई टोल्ड थर्ड पॉइंट ऑफ इंपोर्टेंट पर क्या बोला था मैंने? ए का पर क्या होगा? हमेशा डायमेंशनलेस. ट्रिगोनोमेट्रिक साइन जो रहेगा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का अंदर रहेगा. ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, मेट्रिक फंक्शन क्या होगा? हमें क्या होता है? ये भी क्या? डायमेंशनलेस. ओके, और साइन इनवर्स में रहता है क्या? डायमेंशनलेस. डायमेंशनलेस. और एक लॉग भी होता है. लॉग में क्या? लॉग का भी बेस कुछ होता है. लॉग भी क्या होता है? ये हमेशा नंबर होता है. लॉग का भी अंदर क्या ऑलवेज है? नंबर. सो इट्स ऑलवेज डायमेंशनलेस. ओके, अगर कोई फॉर्मूला में एक्सपोनेंट होगा कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होगा तो वो सब चीजें हम लाइक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का अंदर तो नहीं निकाल सकते ना. वी कांट फाइंड that, see, by dimensional analysis we are able to find only the thing contain dimension, having dimension, and the thing who does not have any dimension we can't find. So exponential के ऊपर का तो फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि वो डायमेंशन नहीं है. सिमिलरली ट्रिगोनोमेट्री का हो गया, लॉग का भी हो गया,
तो वही बोल रहे हैं अगर कुछ फॉर्मूला में एक्सपोनेंट होगा कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होगा तो उसका हम डायमेंशन फाइंड नहीं कर पाएंगे। ओके, क्योंकि वो डायमेंशन लेस होते हैं, डायमेंशन लेस होते हैं। ओके फाइन, do the limitation. Okay, this method does not work when physical quantity depend on more than 3 variable। देखो क्या बोल रहे थे हम, एमएलटी में ही फाइंड कर सकते हैं। ओके फाइन, okay, this method does not work when physical equation contain more than one variable, like more than 3 variables MLT, क्योंकि हम एट द एंड क्या एमएलटी में कन्वर्ट करते हैं ना, तो उससे ज्यादा होगा तो कर सकते हैं, अगर ए में भी कर सकते हैं, बट उससे ज्यादा तो नहीं कर पाएंगे। मतलब ये कि इफ ए फॉर्मूला इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स, मिनिमम फॉर्मूला क्वाइट कॉम्प्लेक्स, ओके यू कांट एबल टू फाइंड, इतना इजी नहीं है ना। देखो फिजिक्स में क्या होता है, फॉर्मूला में सब कुछ होता है ऑलमोस्ट, यू कैन डिराइव द फॉर्मूला बाय मैथमेटिक्स। अगर इतना इजी होता है फॉर्मूला डिराइव करना तो कर सकते हैं इजीली, राइट, तो इतना पढ़ने का जरूरत नहीं था। बट मतलब क्या है कि वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम फॉर्मूलाज वी कांट फाइंड बाय दिस मेथड। ओके, बट सिंपल थिंग वी कैन डू, सिंपल थिंग वी कैन फाइंड। ओके सी, हाँ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट दिस वन, इसमें से ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। This one very important, this one, okay, and see, देखो मैंने क्या बोला, एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। ओके, एनर्जी वर्क का डायमेंशन सेम होता है, टॉर्क का डायमेंशन सेम होता है, ये तो तीनों है ना। देखो एनर्जी का पढ़े तो ना, एनर्जी क्या है, वर्क डन होता है, वर्क डन तो वर्क डन का डायमेंशन इक्वल टू एनर्जी डायमेंशन। तो एक होता है टॉर्क, वो पढ़ेंगे, रोटेशन इफेक्ट ऑफ फोर्स, रोटेटिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स को टॉर्क बोलते हैं, वो बाद में पढ़ेंगे। तो इनका डायमेंशन क्या सेम, डायमेंशन क्या है सेम ही है। तो तुम डायमेंशन निकाल दो m1 l1 t - 2, बट किसका नहीं पता है ना। देखो वर्क का भी तो m1 l1 t - 2 है, तो m1 l2 t - 2, एनर्जी का भी m1 l2 t - 2, अब टॉर्क का भी m1 l2 t - 2। तो कुछ यूनिकनेस नहीं है ना। तो क्या बोला, if diameter of given of physical quantity may not be unique, not unique ना। तो m1 l1 t - 2 सबका डायमेंशन है, वर्क का भी, एनर्जी का भी, टॉर्क का भी, तुम निकाल दिए, बट वी डोंट नो व्हिच क्वांटिटी इट इज। तो यही बोल रहे हैं, the dimension are given by quantity may not be unique, यूनिक नहीं है ना, कि वर्क का, एनर्जी एंड टॉर्क का डायमेंशन सेम ही है, m1 l2 t - 2। ओके, तो द सेम, तो उसमें एक लिमिटेशन है कि वो ये नहीं बोल पाएगा किसका डायमेंशन एग्जैक्टली है, इट कांट टेल व्हिच फार्मूला एग्जैक्टली इट इज। ओके, एंड लास्ट वेरी ऑब्वियस, it give no information about the physical quantity स्केलर वेक्टर। वेक्टर पढ़ेंगे आगे जाके, रिएक्शन होता है वो होता है, बट ये जो फॉर्मूला है ना, जो डिराइव करें, we can't get to know it's a vector or scalar। okay, और कुछ क्वेश्चन वैसे बच्चों, क्वेश्चन वो क्वेश्चन कर लोगे। ओके, so there are questions we'll discuss। okay, so thank you, and at this video I covered that unit and dimension। तो क्या पढ़े, यूनिट क्या होता है, डायमेंशन क्या होता है, उसका एप्लीकेशन क्या है, और थर्ड एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट था, और जो लिखा मैंने सब इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एक्सपोनेंट का टर्म कांस्टेंट रहेगा, वी कांट एबल टू फाइंड, ओके, यूनिटलेस कांस्टेंट, कांस्टेंट विद यूनिट्स। तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। एक काम करना, अच्छे से देखना वीडियो और क्वेश्चन लगाना, इजी है, समझ आ जाएगा। ओके, और मैंने कुछ क्वेश्चन छोड़े आपके लिए, तो ट्राई करना, आई विल गिव द सॉल्यूशन इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, ऑन द डिस्क्रिप्शन, इन द डिस्क्रिप्शन आई विल गिव द सॉल्यूशन, बट खुद से ट्राई करना कि बन जाए। ओके, so on this video you are able to complete that unit and dimension। I hope you get that response is quite good, and if you not get anything, to let me know in the comment section, I am here to help you। So thank you for being with me for this good session, for this session, and आगे ऐसे ही चलते रहना, बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर हम डिस्कस करेंगे अबाउट द वेक्टर। ओके, तो आई होप समझ आया होगा तुमको। क्वेश्चन करना, अगर कुछ से नहीं आया तो डू लेट मी नो। एंड अगेन मैं बोल रहा हूँ, दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट द फॉर्मूला। okay, sorry, the next chapter will be not vector, it should be error। okay, so in errors and significant figure we can develop the errors। okay, so उसमें पढ़ेंगे भाई how to calculate errors। okay, तो उससे पहले कुछ बेसिक मैथमेटिक्स कर लेंगे एरर्स पढ़ने से पहले। okay, एंड आई होप ये चैप्टर समझ आएगा, इजी सा चैप्टर है, 3-4 रूल है एडिंग सब्ट्रैक्शन का, एंड कुछ नहीं समझ आएगा, इफ यू डोंट गेट एनीथिंग टू लेट मी नो, एंड प्लीज सॉल्व द क्वेश्चन एज सून एज पॉसिबल ऑफ द चैप्टर, बिकॉज how to revise physics quickly or how to understand physics quickly by solving the question। if you are able to solve the question, it means you know the theories। अगर क्वेश्चन नहीं बनता तो theory नहीं पता। see,
तुमको अगर पता करना है, you know the theory or not, you have to solve the question. Okay, if you able to solve the question, it means you know theory. अगर नहीं होता है तो please go back and revise the theory and do it again. Okay, so please do it everything, do every question carefully, and I hope you get it. If anything you're not getting, do let me know in the comment section, and thank you for being with me. Okay, we'll meet in the next chapter. The next chapter will be errors. Okay, thank you.